Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do another uh, another video of agriculture optional answer writing practice. सो हम लोग एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। सिंपल तो नहीं पर एक एवरेज क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका, लास्ट ईयर भी आया था। हाउ टू इनहेंस नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन ट्रांसप्लांटेड राइस। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेड राइस? अगर आप कभी राइस के कल्टीवेशन को देखोगे तो पहले जैसे खेत में होती है तो पहले राइस के सीड्स को दे करके उससे राइस की जो प्लांट स्मॉल प्लांट से वो उगती है, फिर उन्हें खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। They are again, first of all we grow rice seedlings and then they are transplanted into the fields, okay, in a certain way, in a perfect row and row arrangement. You will, if you have visited rice field, you will be able to see this practice. It is a very common practice in India. So today's question is how to enhance nitrogen use efficiency in transplanted rice. Okay, so how nitrogen is lost in transplanted rice, nitrogen is lost from soil. Everything I have discussed in detail in the course. When you go to the playlist and you go to paper 1 agriculture optional playlist, there you can read this in detail in topic 28, I think. In topic 27, 28, around this I have discussed these things in detail. So you can go there and watch the video and learn these things in detail. But today we are going to just discuss this question. From here you will also get your concepts clear. यहाँ से भी आपके concept clear हो जाएंगे, how to enhance nitrogen use efficiency in soil. And if you know this question, अगर आपने मेरे कोर्स को लिया हुआ है, पढ़ा कोर्स के वीडियोस को देखा हुआ है, ओवरऑल दैट इज फ्री, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो आपको पता होगा क्या क्या रीजंस हैं एंड यू कैन राइट इट बाय योर ऑन। एंड आफ्टर राइटिंग आप ये वीडियो को देख करके यहाँ से आप इवेलुएट सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी देखा हुआ है, नहीं भी जानते इसके बारे में, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, you can just see right here in the video and you will learn a lot of things about this topic और यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। So let's start the answer. Let's start the answer. So first of all we should know that nitrogen contributes about 20% yield of rice, about 20% yield of rice. That is, if there will be any disturbance in nitrogen, you can see that 20% yield loss in rice can be easily seen. अगर नाइट्रोजन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, उन्हें नाइट्रोजन सही मात्रा में नहीं मिली, तो आपको क्लियरली 20%, 15-20% राइस के yield में चेंजेस देखने को मिलेंगे. So nitrogen is a very much contributor in nice rice cultivation. 20% yield is a very high amount. Moving on, you should also know that most of the applied nitrogen is lost from the soil. Most of the applied nitrogen lost from soil. You can write these things as a part of your introduction. You can introduce by writing these 2-3 lines and then go to how to enhance steps to enhance nitrogen use efficiency. So जो applied nitrogen हम जो nitrogen we apply as fertilizer or anything else, which is applied mostly we apply urea. So the nitrogen which we apply is generally lost, most of it of lost, only 30% is used. Hardly 30% of applied is used, hardly. It may be lower than it. मतलब maximum जो normally in open fields we use only 30%, maximum 30% is used, and around 60 to 70% is lost. It lost from the soil. हम डालते हैं जो यूरिया डालते हैं अपने राइस के लिए, उसमें से हमारा 20-30% यूज होती है, अराउंड 70% लॉस्ट हो जाती है. तो यू कैन सी हाउ लेस इज द नाइट्रोजन यूज efficiency. So today we are going to see how we can increase in or enhance nitrogen use efficiency. कैसे हम लोग नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे. So let's move into it. Practices to enhance nitrogen use efficiency. So the first one is we will manage nitrogen uptake efficiency. What is uptake efficiency?
Nitrogen uptake efficiency is efficiency efficiency with which nitrogen is taken up by the roots. So we need to manage uptake efficiency, we need to manage utilization efficiency. Utilization efficiency. तो how can we enhance uptake efficiency? से roots है, roots uptake करती है. So we should try that कि जो नाइट्रोजन है वो roots के आसपास ही उन्हें मिल जाए. अगर जहाँ पर roots intake नहीं है, roots की अच्छी डेप्थ नहीं है और नाइट्रोजन इधर उधर है, तो the roots will not able to take this nitrogen properly if the nitrogen is far away from the roots. So it should be applied near the roots so that we can enhance nitrogen uptake efficiency. Utilization efficiency is same is that, so that it enhances utilization efficiency. Secondly, we can use organic matter. Why we should organic matter? Because organic matter increases water holding capacity of soil. Organic matter increases water holding capacity of soil. And you should know for nitrogen, जो for nitrogen to be taken, water is very essential. अगर आप किसी सूखे फील्ड में, if there is a dry field and you spray or you use urea there, you drop urea there, the crop will not be able to take up that urea, take up that nitrogen. So जो ऑर्गेनिक मैटर इसलिए जरूरी है, अगर ऑर्गेनिक मैटर हमारे अच्छा से हमारे फील्ड्स में रहेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल की अच्छी रहेगी. और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जब अच्छी रहेगी तो उसमें वाटर अच्छे से स्टोर रहेगा, और उस समय पे अगर आप नाइट्रोजन को डालें तो the so roots will be able to observe it properly, because mainly nitrogen is uptaken by through with water only. Okay, mostly by water. So you should know this. Thirdly, split application of nitrogen fertilizer. व्हाट इज स्प्लिट एप्लीकेशन? मतलब एक साथ अगर हमको मान के चलिए पूरे सीजन की रिक्वायरमेंट है क्रॉप की 100 kg ऑफ नाइट्रोजन, ओके, तो हम एक ही साथ पूरे 100 kg को नहीं यूज करेंगे. वी विल नॉट अप्लाई होल 100 kg इन अ सिंगल स्प्लिट. हम लोग स्प्लिट करेंगे. प्लांट्स के फेजेस होते हैं, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज. तो हर एक फेजेज में आप ये कह सकते हैं, फ्लोरल फेज जब उसमें फ्लावर निकलता है, तो हर एक फेज में नाइट्रोजन की एक सर्टेन यूज होती है उनके लिए. तो हम लोग स्प्लिट एप्लीकेशन करेंगे. फॉर राइस mostly we do is 25 days after 50 days और 75 days आफ्टर सोइंग. तो इससे क्या हुआ कि जैसे हम पहले नाइट्रोजन से है इसको 33 करके तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और पहला डालेंगे 25 दिन के बाद, दूसरा डालेंगे 50 दिन के बाद, और थर्डली वी विल अप्लाई इट आफ्टर 75 days आफ्टर सोइंग, दैट इज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग. तो व्हाट विल हैपन इज दैट अगर आप 100 kg एक ही साथ डाल दो, चलो जितना हो सके प्लांट लेगी, देन देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ वेस्टेज, द नाइट्रोजन विल बी लॉस्ट. बट वाइल वी यू एड एज स्प्लिट एप्लीकेशन, अगर हम इसे स्प्लिट एप्लीकेशन में डालें तो क्या होगा, इसमें जितना होगा कम वेस्टेज होगा, कुछ लिया प्लांट्स ने, फिर वेस्टेज हुआ, फिर लिया, फिर वेस्टेज होगा, कम वेस्टेज हुआ, लिया. क्योंकि एक साथ तो नाइट्रोजन, एक प्लांट की कैपेसिटी होती है कि वो एक साथ उतना ही नाइट्रोजन ले सके. तो अगर आप इसे स्प्लिट में डालेंगे तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी विल इंक्रीज. So that is why we should do split application of nitrogen fertilizer. Fourth, we should do controlled irrigation. Why controlled irrigation? क्या होता है, नाइट्रोजन इज मैक्सिमली लीच्ड. सपोज दिस इज योर फील्ड एंड दिस इज वाटर इज ओवरफ्लोइंग नियर इट. तो क्या होगा, ये वाटर जब ग्राउंड में लीच होती है, व्हाट इज लीचिंग, मूवमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स ग्राउंड वाटर. तो व्हेन दिस ग्राउंड में जब ये वाटर लीच होगी तो इसके साथ जो फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है वो भी लीच होंगे. सो इट विल इनहेंस द लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंड फर्टिलाइजर्स विल बी or nitrogen, not I'm saying fertilizer, sorry, nitrogen will be simply lost. Okay, so we need to do controlled irrigation. यहाँ पे एक चीज आप यूज कर सकते हैं, फर्टिगेशन. What is fertigation? फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, इट कम्स फ्रॉम टुवर्ड्स फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन. तो इसमें क्या होता है, जो हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं, तो यूज उसी में हम लोग ड्रिप इरिगेशन के टैंक में ही फर्टिलाइजर को डाल देते हैं. तो उससे क्या होता है कि रूट्स पे जब when the roots पे जब ये ड्रॉप ड्रिप इरिगेशन हो रही है तो यहीं पे इसके साथ फर्टिलाइजर गिर रही है. हेंस अपटेक जो होगा इस फर्टिलाइजर का, इस नाइट्रोजन का, काफी अच्छा होगा. सो इट एनहांसेस एफिशिएंसी. I hope you are understanding that.
सो कंट्रोल इरिगेशन करना, उससे इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि लीचिंग कम होगी. ओके, I hope you understand that. Moving on to the next topic, that is use of nitrification inhibitors. How nitrogen is utilized due to nitrification. Nitrogen is converted and lost. So we will use nitrogen and nitrification inhibitors so that nitrification is inhibited. So which things can be used as nitrification inhibitors? We can use neem cake, for example. We can use neem cake. We can use karanj cake. We can use CaCO2, CaC2, etc. These all things are nitrification inhibitors. Okay. Moving on to use of slow release nitrogen fertilizer. So what happens? These slow fertilizers are coated with something. So this coating opens slowly and the fertilizer gets to the soil slowly. तो ये कोटिंग धीरे धीरे हटती है और फर्टिलाइजर की स्लो रिलीज होती है. तो इससे क्या होती है, प्लांट्स आर एबल टू टेक देम प्रॉपर्ली. एक साथ इतना सारा फर्टिलाइजर अगर मैक्सिमम विल बी लॉस्ट. अगर धीरे धीरे फर्टिलाइजर मिले तो रूट्स विल बी able to absorb it nicely and it will enhance efficiency. So what are the examples of slow release nitrogen fertilizers? These are neem coated urea, sulfur coated urea, sulfur coated urea. Neem coated urea is very important because you can see here neem cake is a nitrification inhibitor. So पहले तो ये कोट भी कर रहा है, it is also becoming a slow release और नीम यहाँ पर nitrification को inhibit भी कर रहा है. So it has a dual use. Both it can inhibit in nitrification and due to coating there will be slow release of nitrogen. So it is very important. You must give examples like neem coated urea here. सो दीज वर द सम पॉइंट्स जो हमने आपको बताया. और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं और भी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है. तो आप वो कमेंट करके हमें बताएं कि और भी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, ताकि हम दो हमारे और आपके बीच इन्वॉल्वमेंट बढ़े और इससे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी. योर ब्रेन स्टॉर्मिंग कैपेसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में. सो व्हेन यू डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इट एक्ट्स एज a motivation for us so that we can make more videos like this for you. Okay, that's all for today. Have a nice day. Thank you.